mic. Right? So, as I was saying, that there is a container which has water. The refractive index of water is 4/3. Now there is a fish which is traveling at a speed of 3 meters per second with respect to ground. Now this fish observes that there is a bird overhead which is coming down at 9 meters per second. फिश को यह लगता है कि बर्ड उसकी तरफ 9 मीटर्स पर सेकेंड से आ रही है, ऐसा फिश को लगता है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बर्ड. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बर्ड की एक्चुअल स्पीड क्या होनी चाहिए. Give me a red marker. Now this question is basically a combination of optics and mechanics. The first thing which we have learnt in mechanics is that whenever you calculate velocity, the frame of reference has to be decided, has to be defined. Also we learned that when you say frame of reference, it is a good idea to have a frame of reference which is fixed, or else everything will become relative. Like for example, if I say that the layer, the liquid, the layer of the liquid, the top layer, this is not going to change, this is fixed. Suppose I take this distance as y. The actual distance, say as x. Now इस fish को ये bird यहाँ तो दिखने वाली नहीं है, ये तो ground के respect में ऐसा है. Actually ये दिखाई कहाँ देगी? तो कभी भी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था that mu1 by x plus mu2 by y, power in this case will be 0. It's a plane refracting surface. We have to identify object कौन है और observer कौन है. तो यहां पर observer fish है और object bird है. Right? X is the distance of the object. mu1 is the medium from where the incident rays are coming. That means object से incident rays आ रही होंगी ना. So I can write that 1 by x plus mu by say x dash equals 0. So x dash basically becomes minus mu times x. The relevance of the negative sign is that means जिस medium में object है उसी medium में इमेज भी बन रही है. तो नेगेटिव साइन का बताया था ना मैंने, नेगेटिव साइन का रेलेवेंस क्या होता है, दैट जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में इमेज बन रही है. दैट्स वन. नंबर टू, द सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू एक्स इज वेयर म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, कि जो डिस्टेंस ये एक्स बर्ड का एक्चुअल था, इसको कुछ थोड़ा और ऊपर दिखाई दे रहा है, म्यू एक्स हो ना, एक्स डैश इज म्यू एक्स. ठीक. That means this distance is mu x. आप मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब इस फिश को ये बर्ड एक्चुअली में यहां दिखाई दे रही है. इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो टोटल डिस्टेंस ये दिख रहा है वो है y प्लस म्यू एक्स. विद रिस्पेक्ट टू द फिश, बर्ड का एक्चुअल डिस्टेंस इसके हिसाब से कितना हुआ? y plus mu x. So that's the actual distance of the bird with respect to the fish. Now since he is dealing with velocities, he's talking about velocities, so we differentiate this function.
So I say dd by dt is going to be equal to dy by dt plus mu times dx by dt. You agree? Now the sign convention. First of all, if you see this very, very clearly, dy by dt is the velocity of the fish. And this is what आपने reference इसको माना हुआ है. Just that means जैसे जैसे fish इसके पास जाएगी, y कम होगा, reduce होगा. इसका मतलब ये value negative होगी. You agree? dd by dt is basically the total distance of the of the bird with respect to the fish. और वो भी ये कह रहा है कि नीचे ही आ रहा है. इसका मतलब ये डिस्टेंस भी रिड्यूस हो रहा है. भाई ये जो डिस्टेंस है, यही है ना डिस्टेंस. जब ये नीचे आ रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी रिड्यूस हो रहा है. दैट मींस दिस वैल्यू विल आल्सो बी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम सेइंग डी कौन सा डिस्टेंस है? यहां से लेके यहां तक का. अब बर्ड तो नीचे ही आ रही है और फिश ऊपर जा रहा है. इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस भी रिड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो दिस वेलोसिटी विल आल्सो बी नेगेटिव. तो ये भी नेगेटिव हो गया. म्यू इज 4/3. dx by dt निकाल लीजिए. करिए. So this becomes -6 equals 4/3 into dx by dt. So what is dx by dt? So that means the actual velocity of the bird is 9/2, that is 4.5 meters per second, and the negative sign tells you that it is actually coming down. ये चीज बिल्कुल clear हो गई? So this is one interesting and important concept. Now I'll take a question which takes you to a next level. Have a look at it. Now see the question. Say there is a tank. And there is water in the tank. Right? And the bottom of the tank has a plane mirror. There is a bird and there is a fish. Right. Now the bird is coming down and the fish is going up. Now the velocity of the bird is 5 meters per second. Velocity of the fish is 2 meters per second. Right? Refractive index of water is 4/3. And velocity of liquid is 2 meters per second. Welcome to hell. So everything is moving in this system. So the liquid is coming down with 2 meters per second. The fish is going up 2 meters per second. The bird is coming down 5 meters per second.
and there is a mirror, and the refractive index of water is 4/3, and this is air. Now the question is, there are two questions basically. I mean actually four. For example, if I ask you, find, likho, the speed of the image of the fish. Find the speed of the image of the fish with respect to the bird seen directly. That's one part. Second part is, find the speed of the image of fish seen indirectly by bird. Now, which it means is through the reflection of the mirror. फिश की जो इमेज होगी उसकी वेलोसिटी बर्ड को क्या दिखाई देगी, ये वो पूछ रहा है आपसे. तो देखने वाला कौन है? बर्ड. सो दैट मीन्स बर्ड बिकम्स द ऑब्जर्वर एंड फिश बिकम्स द ऑब्जेक्ट. सोचिए. Now, as I told you, what is going to be the first step? We have to first identify a fixed surface. अब ये तो fixed नहीं है. Bottom को ले लेते हैं. So let's take this distance as h. 1. This as h2 and this as h3. Right. If I were to use proper sign convention, then can I say that dh1 by dt is going to be positive 2 meters per second? As the fish goes up, the distance will increase. With the same logic, can I say that dh2 by dt is going to be minus 2 meters per second? The level is coming down. And with the same logic, I can say that dh3 by dt is also minus 5 meters per second. Right? So that's the first step. The second step is, this is the object, that's the observer. मतलब हो ये रहा है कि ये रे ऐसे जा रही है और रिफ्रैक्ट होके बर्ड के पास आ रही है. इसको अगर मैं पीछे एक्सट्रापोलेट करता हूं तो बर्ड को फिश एक्चुअली यहां दिखाई देगी.
ये मतलब है ना. बट आई डोंट हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, हम इसको रेगुलर वे से सॉल्व करके देखते हैं. नाउ कैन आई से ऑब्जेक्ट यहां पर है, दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर, रिफ्रैक्शन इसी सरफेस से होनी है. तो कैन आई से दैट म्यू अपॉन, नाउ आई वांट दिस डिस्टेंस, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? h2 minus h1 plus 1 by y equals 0. So I get y equals minus h2 minus h1 by mu. लिखते जाओ. ठीक है. राइट. अब मुझे बेसिकली निकालना क्या है? मुझे निकालना है बेसिकली अब डिस्टेंस बिटवीन द बर्ड एंड द इमेज ऑफ द फिश. यू एग्री? वही पूछ रहा है ना ये डिस्टेंस कितना होगा? बता सकता है मुझे कोई? What is this distance? ये तो y है ना, so y कितना है? Plus, how much is this distance? ये total distance d हुआ ना, लिखो. ये d डिस्टेंस ये हो गया ना. हाँ है ना? देखो ध्यान से देखो, नो हरी. कुछ पूछना दोबारा पूछ लो. भाई इस बर्ड को ये फिश यहां दिखाई दे रही है. दिस डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस. वो पूछ रहा है कि इस बर्ड को इसकी इमेज कहां दिख रही है. That means he is talking about the distance between the bird, which is the observer, and the image of the fish. तो वो distance तो यही हुआ ना. तो ये distance कितना है? h2 minus h1 by mu, right? और ये distance कितना है? h3 minus h2. Now, if I differentiate this, करना इसको differentiate. One by mu dh2 by dt minus dh1 by dt plus dh3 by dt minus dh2 by dt. ठीक है. Now, if I fill in the blanks, now mu is 4 by 3. So this becomes 3 by 4. Now dh2 by dt plus minus minus 2 minus dh1 by dt plus dh3 by dt minus dh2 by dt. कितना हो गया ये? आए क्वेश्चन समझ में? पक्का? ऑप्टिक्स में, एंड ऑप्टिक्स क्या, इन एनीथिंग आई फर्मली बिलीव डू 5 कॉन्सेप्ट्स बट प्रॉपरली. 10 कॉन्सेप्ट्स करने की जरूरत नहीं है. 10 कॉन्सेप्ट्स ऊपर ऊपर से किए कोई फायदा नहीं होगा. 5 करो, अच्छी तरह से करो.
अगर 5 अच्छी तरह से किया तो जो 5 आपने नहीं भी किया वो भी हो जाएगा, और 10 आपने बिना मन से या याद करने के हिसाब से या प्रेशर में किया तो एक भी याद नहीं आएगा. सो डू 1 क्वेश्चन इन अ डे, बट डू इट वेरी प्रॉपरली. अल्टीमेटली दिमाग है, भगवान ने दिया है, वो बाकी हम चीज हम अपने आप सोच सकते हैं. अब इसका सेकंड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है. इसको कैन आई रैप दिस? The second part is more interesting. Right? वो सब चीजें हटा देता हूं जो आपके काम की नहीं है. Now, what's the second part? The second part says, ऑब्जेक्ट तो यही है, बर्ड यहां पर है. Now the second part says कि इस बर्ड को, इस फिश की, इस मिरर से इमेज कहां दिखाई देगी, ये किस वेलोसिटी से दिखाई देगी. Let me repeat again. The second part is with respect to the bird, what will be the velocity of the image of the fish through this plane mirror. Try करो. Sorry. Thank you. Try to draw the ray diagram. कोशिश करो जरा रे डायग्राम बनाने की. Whatever has been asked उसके बेसिस पर एक रे डायग्राम बना के देखो. First identify who's the observer. Bird. Right? And now where is the object? Image of the fish. So now image of the fish becomes the object. Right? अब जरा रे डायग्राम बना के देखो. Exactly. ऐसे देखना. See, the point is, let's understand. ये ऑब्जेक्ट है. ये डिस्टेंस कितना है? इसका इमेज पीछे कितना बनेगा? मतलब ये ऐसे आ रहा होगा ना?
जाएगा, रिफ्रैक्ट होगा, और इसको यहां पर कौन मिलने वाला है? तो एक्चुअली में ये रे कहां दिखाई देगा इसको, इमेज? ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर में इसका इमेज हुआ, दिस बिकम्स एन ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली रे ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हुई, इस सरफेस को लगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ये रिफ्रैक्ट हुई, बर्ड की आंख तक पहुंची, बर्ड को लगेगा कि ये इसको यहां दिखाई दे रहा है. सो बेसिकली बर्ड को फिश की इमेज यहां दिखने वाली है. ठीक है, नाउ हाउ डू वी डू इट मैथमेटिकली? रिफ्रैक्शन तो यहीं पर हो रहा है, एंड फॉर दिस सरफेस वेयर रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग, बेसिकली दिस बिकम्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. भाई सरफेस ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो ये डिस्टेंस हुआ, तो ये कितना हुआ? h2. नाउ टेल मी, फॉर दिस सरफेस ये रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? For this surface, is this object real or virtual? Real. Why? Because ray यहां से diverge करके जा रही है. See, for this object, through this mirror, this becomes a virtual image. ये virtual है, पर इस surface के लिए तो ये ray या ये object, ray भी real है, object भी real है. तो आप क्या लिखेंगे? mu upon plus 1 by y equals 0, which means y equals minus h1 plus h2 by mu. सही है ना? तो ये डिस्टेंस कहां से है? सरफेस से है ना? ये सब डिस्टेंसेस आपने कहां से मेजर किए? फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज द डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कौन सा हुआ? ये हुआ ना? लेकिन देख कौन रहा है? दैट मीन्स टू ऐड दिस डिस्टेंस ऑल्सो. तो ये कितना हो जाएगा? h3 minus h2. This is going to be the total distance. इसको डिफरेंशिएट करो. करें डिफरेंशिएट? हो गया. फिल इन द ब्लैंक्स. आया मजा सवाल में? है ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. So now you'll have to just substitute the values with the signs, respective signs, plus and minus. You get the answer. Wonderful. Clear? Right. Now these were the two cases. Now we'll have a third and a fourth case. The third and the fourth case में क्या करेंगे हम? पहले तो इस पूरे खानदान को मिटाना पड़ेगा.
ठीक है, अब क्या है? रिवर्स, फिश ऑब्जर्वर बर्ड ऑब्जेक्ट। राइट? बस आसान सा सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बताना है कि फिश को बर्ड की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है। डायरेक्टली फिश ने ऊपर देखा, और इसी फिश को इस बर्ड की इमेज इस मिरर में से देखने पर क्या वेलोसिटी दिखाई दे रही है? एक एक पार्ट करते हैं आराम से। पहले डायरेक्टली की बात करते हैं। स्टार्ट करें? ओके, ऑब्जेक्ट कहां पर है? सो हाउ डू आई स्टार्ट? 1 बाय this distance. Good. ठीक है, मतलब यहां से ये डिस्टेंस, ये वाला डी है। देखना किसको है? फिश को। आई हैव टू ऐड दिस डिस्टेंस टू दिस। ये डिस्टेंस कितना है? ये वाला। हाँ, ये वाला ना। H2 प्लस ये पूरा D बना, है ना? डिफरेंशिएट मारो। पूछो पूछो, डाउट है कोई? भाई यहां से ये डिस्टेंस यही है ना, ये वाला प्लस ये कितना है? H2 माइनस H1। So with proper sign convention we can find this.
ठीक है, third part is clear. Now let's see the fourth part. रेडी? कैसे हुआ होगा? रेड मार्कर ले लेता हूं. अभी तक ऐसे हुआ होगा ना? This distance would have been, explain this question again. करूं एक्सप्लेन? आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा? कैन एनीबडी एक्सप्लेन दिस? ये सब में मुंह नीचे कर लिया, कहीं ऐसा ना हो सर हमसे कह दें. आप करोगे एक्सप्लेन? आ जाओ. So when he says explain the question again, it is the first two parts. Can we correct him? इससे बात हो सकती है बच्चे से? नहीं हो पाएगी. क्वेश्चन लिख के देखो, पूछना कि which part, which question, कौन से पार्ट का. तो एक बार इसको एक्सप्लेन दोबारा कर दे. मतलब थर्ड पार्ट से. ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जर्वर है. तो हमने बताना है कि ये अगर इसको डायरेक्टली देखेगा तो इसकी स्पीड मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, हमें ये बताना है. तो हमारे लिए ये पहले तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है और हमारा ये ऑब्जेक्ट है. तो हमारा एक फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, जिसमें पावर इज इक्वल टू हमारा रिफ्लेक्टिव जहाँ से रे आ रही है वो और अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस जहाँ पर रिफ्लेक्टिव रे गई और ये हमारा इमेज का डिस्टेंस आता है. तो यहाँ से ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमारा डिस्टेंस क्या है, डी है, तो हमने यहाँ पर रखा एच डी माइनस एच पर एच टू होगा प्लस म्यू डी हमें पता नहीं है, यहाँ से हमने डी निकाला, यहाँ से हमने डी निकाला. ठीक है, तो ये डी कौन सा डिस्टेंस हुआ? डी ये वाला डिस्टेंस हुआ. हाँ ये वाला डिस्टेंस हुआ. और हमको मेजर कहाँ से करना है? और मेजर ये फिश को देखना है कि ये इसकी तरफ कैसे आ रही है इसकी इमेज, तो हम इसकी रिस्पेक्ट में देखेंगे सब कुछ. तो हमें ये टोटल डिस्टेंस इसके लिए निकालना पड़ेगा. करेक्ट. तो हमने जो पहले निकाला है ये डी, यहाँ से इसमें हम प्लस करेंगे इसका जो डिस्टेंस है ये. वेरी गुड. इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, एच टू माइनस एच वन कर देंगे, हमारे लिए निकल जाएगा. फिर हम प्लस कर देंगे, कर डिफरेंशिएट करके दिखा दो. जो हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हो जाएगा पहले तो ये आप माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे? माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो कन्वेंशनली आपको बता रहा है. हमें यूज करना होता है. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव ना, कम थोड़ी हो सकता है, जीरो से कम थोड़ी कोई डिस्टेंस हो सकता है. एच सी माइनस एच वन प्लस जो फिश का इससे डिस्टेंस है वो है एच टू माइनस एच वन. हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे. अब तो कर लेंगे बच्चे. ब्यूटीफुल. बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन. व्हाट्स योर नेम? Ritika has explained it beautifully. Very impressive. Very good. That means you have actually understood the concept. ठीक है? Now, let's see the fourth part. Now, in the fourth part, what he's saying is कि इस फिश को, इस बर्ड की, इस मिरर से इमेज कहां दिखाई देगी? मतलब ये हुआ, what it exactly means is that in the initial state, this is the object, the bird, रे आया, रिफ्रैक्ट हुआ, यहां फिश है,
फिश को ये यहां दिखाई दिया, ये इसके बीच का डिस्टेंस था। अब ये रे फर्दर आई, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो इमेज है वो यहां बनेगा, हाँ या ना? अब टेल मी वन थिंग, इस मिरर को ये रे कहां से आते हुए दिखाई दे रही है? यहां से, है ना? दिस वन, ये डिस्टेंस है कितना? मतलब ये हो गया H3 माइनस H2, है ना? H3 माइनस H2 प्लस D, और D कितना था? म्यू टाइम्स H3 माइनस H2। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, शुड आई टेल यू अगेन? देखो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि इस मिरर को पर जो ये रिफ्लेक्शन हो रही है, for this mirror, where is the object? Which means, where is this incident ray coming from? Now, if I extrapolated, the incident ray is coming from this point. That means for this mirror, this becomes the object distance. How much is this object distance? First, we have this distance, which is, नहीं यार, which is H2. इसकी जरूरत ही नहीं है. H2, yeah. Plus this distance, this is D, so this is mu times H3 minus H2. ये हुआ distance, D dash ले लेता हूं, of this object from this mirror. ये उतना ही नीचे बनेगा, तो ये D dash होगा ना? हाँ या ना? अब क्या होगा इसके बाद? What happens now? Can anybody explain me? बताओ, क्या ये रे को बाहर लेके रिफ्रैक्ट करूं? दोबारा करूं? अगर मैं ये रे को रिफ्रैक्ट करके बाहर निकालूंगा तो कौन देखेगा? किसको दिखाई देगा? बर्ड को। देखना किसको है? तो इसका मतलब जब ये रे रिफ्लेक्ट होके गई तभी देख सकती है फिश? नहीं, बात समझ में आई। ये रे आई, डायरेक्टली बर्ड ने देखा, फिश ने देखा कि बर्ड यहां पर है। In the second part, I've extended this ray. I did the reflection here. Now this reflected ray, basically fish इसको देख रही है। फिश को ये यहां से दिखाई दे रहा है ना, डिस्टेंस। बट अगर मैं इसको रिफ्रैक्ट करके बाहर ले जाऊंगा तो ये रे किसको दिखाई देगी? बर्ड को। तो देखना किसको है? सो दैट मीन्स इसका देयर इज नो नेसेसिटी एट ऑल। मुझको तो अब देखना ये है कि इस फिश को ये जो बर्ड की इमेज है, ये डिस्टेंस कितना है इसके लिए। तो बेसिकली मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, यस और नो? ये कितना डिस्टेंस है, कैसे निकालेंगे? h1 प्लस एंड d dash is h2 प्लस mu times h3 माइनस, सो दिस इज द न्यू d। आया समझ में अच्छी तरह से? So this was a good illustration. We've taken both the formats. I mean, you cannot have a more tougher problem than this, can you? You have a bird which is moving, you have a fish which is moving, you have liquid which is moving, and you have a reflecting mirror. आपको difficulty हुई कुछ? समझ में आ गया अच्छी तरह से? I did not take the concept of relative velocity. I could have done one thing. मैं लिक्विड की लेयर को रेस्ट पर लेके सबकी वेलोसिटीज चेंज कर सकता था, but there is no point. I mean, it is good that we could solve it using
rest frame and or the ground frame. That is much better. Right? Now let's try a question which came in 2009. It's a similar question. देखिए, what does the question say? This came in 2009. I'm reading it for you. He says that there is a ball which is dropped from the surface of the water from a height of 20 meters. The refractive index of water is 4/3. There is a fish which is inside. In the line of the ball. This is called overhead viewing, by the way. Now he says, at an instant when the ball is 12.8 meters above the surface, what is the speed of the ball with respect to fish? Speed of the ball with respect to the fish. I don't think we should take so much of time. आप मुझे बात बताओ, ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जर्वर, he says find the speed of the ball with respect to fish when the ball is here. यहां आते आते बॉल की वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हो गई होगी ना? ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 7.2 meters. अप्रोक्सीमेटली 7 ही मान लेते हैं, तो √2GH कितना हुआ? ये कितना हुआ? So that means the ball की actual speed 12 meters per second है. देख कौन रहा है? Observer. So I would say 12, sorry, mu कितना है? 1 by plus 4/3 by V
इक्वल्स 0, वही mu1 by x प्लस mu2 by y इक्वल टू 0 हुआ ना. ऑब्जेक्ट 1, x वेलोसिटी dx by dt, mu2 वाटर 4/3, y जो इसकी वेलोसिटी समझ में आएगी. सो हाउ मच इज दिस? कितना हो गया? एनी प्रॉब्लम्स? कोई समस्या? क्लियर? ठीक है. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच came in the JEE in 2002. See the question. This is JEE 2002. Now what is the question? He says that there is an observer who can see through a pinhole at the top end of a thin rod of height h. मतलब यहां से ये ऑब्जर्वर है, ये इस एंगल से देख रहा है कि इसको ये एंड ऊपर का दिखाई दे रहा है. एक रॉड है जिसकी हाइट h है. बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है. हाँ यार. अब बीकर की जो हाइट है, दिस इज 3h. ये और भी खुशी की बात है. हाँ मतलब क्या करें. अब भाई साहब बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कि भाई साहब बोलते हैं कि ये जो लिक्विड है आप इसको फिल करते हैं टू अ हाइट 2h. और जो इस कंटेनर का डायामीटर है वो भी 2h है. वाह क्या बात है. अब लिक्विड जब आपने 2h तक डाला तो इन श्रीमान को ये दिखने लगा. जब लिक्विड नहीं था, when the liquid was not there, he could see the top, say point A. Now he fills the liquid to a height 2h. Now from here only he can see the bottom point B. तो बस आपसे पूछ रहा है ये कि जनाब इसका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा. बस ये बेसिक सा छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल है. ये बेचारे बच्चों के साथ कितना अत्याचार होता है.
व्हाट इज द आंसर? नहीं हुआ। क्यों भाई? अच्छा, कैन एनी वन ऑफ यू ड्रॉ द रे डायग्राम? बना सकता है कोई? ऐसे हो रहा होगा ना कुछ? है ना? पक्का? या अगर मैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल देखूं तो रे ऐसे आई, ऐसे आ गई, रेयर से डेंसर में, तो उस केस में ये आई हो जाएगा और ये हैं जी। पक्की बात? आई कितना होगा जरा बताना ज्योमेट्री से, क्या लग रहा है आपको आई कितना होने चाहिए? आई ये वाला एंगल हुआ ना, कितना हुआ ये? बोलो। ये 2h है, ये कितना हुआ? ये h, और ये कितना है? ये भी h, ये भी h, तो ये कितना हुआ? सिमेट्रिकल है ना, ये 2h 2h है। सी दैट सिमेट्री? ये ऑब्जेक्ट जो है ये h, दिस इज 2h, दिस इज 2h, यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, r कैसे निकालोगे? ये डिस्टेंस कितना होगा? h, बोलो। और ये डिस्टेंस कितना है? ये लेंथ कितनी हुई? साइन r निकालने के लिए ये बाई ये चाहिए होगा ना, कितना हो गया? साइन r कितना हो गया? हाँ, मतलब h अपॉन so I can say 1 sin 45 is mu sin r. So 1 sin 45 is mu. This will become 1 by root 2. So mu is going to be इसमें 100% हमने सिमेट्री अज्यूम करके ही किया है। ठीक है? राइट? अब एक क्वेश्चन करते हैं जो J 2000 में आया है। How is the preparation going on? This time you don't have the board weightage also, ना? Mains के लिए तो तैयारी कैसी है?
मार्क्स कैसे आ रहे हैं? Which subject are you most prepared? Chemistry. And least preparation? Least preparation is maths. And physics is in the middle. Physics में 12th के सारे पोर्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है बिल्कुल अच्छी तरह से? थोड़े बहुत, not very sure. What about class 11th portion in physics? Waves, heat, SHM, ठीक है? Are you revising them? कैसे क्या कर रहे हो? What are you revising them now और अभी पहले 12th पर फोकस कर रहे हो पूरा? And you have regular tests. Text होते रहते हैं regularly. उसमें performance ठीक जा रही है? देखो 2000 में क्वेश्चन आया ये, मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूं, वही टाइप्स करा रहा हूं जो रेलेवेंट है और जो डेफिनेटली जिन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं. रेडी? क्या कहता है क्वेश्चन? He says that there is a rectangular slab A, B, C and D of refractive index N1. It is immersed in a liquid. ये जो slab है, the liquid is outside, मतलब ये this is a rod type of a thing, solid. This is glass. इसको सराउंड किया हुआ है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 लिक्विड से, and he says N1 is greater than N2. मतलब the refractive index of this material is greater than the refractive index of the material outside. Now he says that there is a ray of light which enters. This is alpha max. Now he says that what will be the maximum value of alpha. ये इंसिडेंट रे का मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है, कहां तक ले सकते हैं, सच दैट द रे कम्स आउट फ्रॉम CD, which means the ray has a total internal reflection at AC. AC पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, उसके लिए अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है? करो ट्राई. पहले तो थोड़ा सा आपको मैं एक दो तीन चीजें बताता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? थोड़ा समझ लेते हैं इसको. सपोज दिस इज एन इंटरफेस. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. आई कीप एन ऑब्जेक्ट हियर. This is the incident ray and this is the angle of incidence. Now, if I say that μ2 is less than μ1, so there is all probability that this ray will deviate away from the normal. Suppose I increase the angle of incidence to such a value that this ray almost
grazes the surface, the refracted ray. After this, the ray will start coming backwards. This is called total internal reflection, and this angle is called the critical angle. And how do you calculate the critical angle? Is that mu1 sine theta c is mu2 sine 90. Therefore, sine theta c is basically mu2 by mu1. So if you have anything greater than theta c, then definitely the ray will totally reflect. इस पर एक क्वेश्चन और भी आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो भी हम समझ लेते हैं. Is that if they ask you to plot deviation versus angle of incidence graph, right? Deviation versus angle of incidence. Now let's see the deviation. ये R हुआ ना, और ये I हुआ, and this is R. So that means this is the deviation. So deviation is R minus, right? Now what is R minus I? How do you calculate R minus I? Is again, I can say that mu1 sin I is mu2 sin R. You agree? So sin R कितना हो जाएगा? mu1 by mu2 into, and R will be sin inverse mu1 by mu2 into sin I. So deviation will be this angle minus the angle of incidence. You get my point? समझ में आया? If I plot deviation versus angle of incidence, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा. मतलब this sin inverse of this function minus I, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा. ये किस एंगल ऑफ इंसिडेंस तक पॉसिबल है? थीटा सी. थीटा सी के बाद क्या होगा बताइए? What will happen after theta c? The ray will start reflecting back. समझे कि नहीं समझे? पक्का? और प्लेन मिरर की रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डिविएशन कितना होता है? पाई माइनस 2i. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ना, ये रे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई. दिस इज आई, दिस इज आई. So this is the deviation. So this is pi minus I in this case is theta c. तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा और ये रे कुछ ऐसे बनेगी. I mean ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी. pi minus 2i, slope minus 2, है ना? तो it will be a straight line. So this is the total deviation versus angle of incidence graph. इसको बना लीजिए, ये काम आ सकता है आपको. With the limitation of time, I am going slightly faster, and I can only do those topics which are absolutely imperative, जो बिल्कुल ही जरूरी हैं. Clear? ये पार्ट मेरे को आपको बताना था. Now once we know this part, now let us see how we solve this question. ठीक है? Now logically, he says n2 is less than n1, right? ये कह रहा है ना? बोलो. n2 कहाँ है? बाहर. n1 कहाँ है? अंदर. ये है रेयरर, ये है डेंसर. तो कैसे जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब क्या इंश्योर करोगे आप? आप ये इंश्योर करोगे कि भाई साहब ऐसा कर दो आप कुछ कि इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की मिनिमम वैल्यू थीटा सी के बराबर हो. अगर आप ये इंश्योर कर दें, इफ यू कैन इंश्योर दैट द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस सरफेस इक्वल्स थीटा सी, देन फॉर श्योर फॉर एनी अदर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही जाएगा. पक्का?
नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट थीटा सी? तो आप क्या लिखेंगे? n1 साइन थीटा सी इज n2 साइन 90. So that means sin theta c is n2 by n1. है ना भाई? So theta c is sin inverse ठीक है. आप चाहते ये हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का कम से कम वैल्यू थी इस थीटा सी के बराबर होना चाहिए. चलिए अब बैकवर्ड चलते हैं क्योंकि हमको तो बेसिकली ये निकालना है. सो वी हैव टू समहाउ रिलेट दिस टू दिस. तो माय डियर फ्रेंड्स एंड कंट्रीमैन, ये 90 है ना, और ये क्या है? आर. आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये आई प्लस आर आर इज आई की आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम. इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू, नाउ दिस आर विल बी मैक्सिमम ओनली इफ दिस इज मैक्सिमम. भाई ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. आप चाहते हो जितनी ज्यादा वैल्यू इसकी होगी सर उतनी कम वैल्यू उसकी होगी, और उस सबसे कम वैल्यू पर अगर ये थीटा सी हुआ तो ये टीआईआर हो जाएगा. अब if I want more value of r, larger value of r, maximum value of r, so I have to take a maximum value of alpha. तो मतलब मैं ये लिखूंगा that n2 sin alpha max is n1 sin r. सही है ना? तो क्या निकालना? क्या अल्फा मैक्स? तो साइन अल्फा मैक्स हो गया n1 बाई n2 इंटू साइन आर. ये साइन आर कितना हो गया भाई? कॉसाई. है ना? बोलो बोलो. और ये आई है कितना बेसिकली? थीटा सी. बोलो बोलो. और साइन थीटा सी है कितना? इससे आप क्या निकालेंगे? इससे आपका क्या निकलेगा? बस इतना ही आसान था. ये होने के बाद में कितना आसान लगता है ना. यही तो लाइफ का असली मजा है. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे ही हो जाता है थोड़ी देर तो मजा आता है, उसके बाद फिर उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है. जब कोई चीज अचीव हो जाती है ना, उसका मजा खत्म हो जाता है. अभी तो आपको क्या लग रहा है ना, आईआईटी में बस किसी तरह से, व्हेन यू गो देयर यू विल रियलाइज ठीक है, रेगुलर था, नॉर्मल सही था, हो गया. हाँ सीरियसली, तुमको मजाक लग रहा है? वहां पर आप जाओगे, वहां अपने फ्रेंड से मिलोगे, राइट? सेकेंड ईयर तक फिर आपको लगेगा अब क्या करें. अब लोग बोलेंगे यार जॉब्स नहीं है आईटी में, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरी सिविल, अब मैं क्या करूं? तो एक काम करते हैं यार, एमटेक प्रिपरेशन करते हैं, एमबीए करते हैं. फिर आप वो करोगे, वहां मारा मारी, फाइनली आईएम्स हो गया, आईआईटी दिल्ली, आईएम्स अहमदाबाद. फिर नौकरी, नौकरी की लाइन, वहां धक्के खाने पड़ेंगे. डज इट एंड एनीवेयर? इट डज नॉट एंड एनीवेयर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको ऐसा नहीं सोचना कि मुझे 3 महीने, जैसे लोग बोलते हैं ना, बस सिर्फ 3 महीने की बात है, ऐसा कोई कुछ नहीं है. ये पूरी जिंदगी की बात है. लेकिन फाउंडेशन अगर मजबूत है, अगर नींव मजबूत है, तो बिल्डिंग स्ट्रांग और ऊंची बना सकते हैं. आपके ये फाउंडेशन ईयर्स हैं. Whether you get into IIT or non-IIT, don't get bothered about that. Life is not restrictive to becoming an engineer and not an engineer. एक इंजीनियर बनना बड़ा अच्छी बात है और इंजीनियर नहीं बनना बुरी बात है, ऐसा कोई रूल बुक नहीं बोलती. आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करोगे तो आप बहुत बड़ा काम करोगे और नहीं करोगे, ऐसा कुछ भी कोई रूल बुक में नहीं है. मैं ईमानदारी से, आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गिव माई बेस्ट, रेस्ट आई विल लीव ऑन गॉड. अगर मेरा ये बेस्ट
मुझे आईआईटी तक नहीं लेके गया, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंटेंस तब होती है जब मैं कर सकती थी, आई हैड द टाइम, आई हैड द अपॉर्चुनिटी एंड आई वेस्टेड दैट। ये मत होने देना बच्चियों का भी। उसके लिए दो चीजें याद रखना लाइफ में हमेशा इंपॉर्टेंट। एक, कभी अंदर से आने वाले सवालों को दबाना नहीं है। दैट इज आस्क योर डाउट्स, रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट्स। लाइफ में कभी भी कोई भी चीज समझ में ना आए, नहीं सर नहीं समझ में आया सर दोबारा बताइए। सेकेंडली, इफ यू अंडरस्टैंड, डोंट थिंक दिस द एंड ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम नेक्स्ट आने वाली है और पूरी जिंदगी आप प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते रहेंगे। सो एंजॉय दिस एंड एंजॉय लाइफ, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तुमने मुझे कभी उदास देखा वैसे? कभी परेशान? यस, आई लाइक इट। अब चलते हैं 2000 साल पहले। हाँ, 2000 साल पहले, ठीक है। 19 ऐसा लग रहा है 1947 बोलने वाला था मैं, जब देश आजाद हुआ। 2000 साल पहले 1999 में एक सवाल की रचना हुई थी। वैसे जब मैं तुम्हारे पास रहता हूं तुमको अच्छा लगता है? सीरियसली, यू फील मोटिवेटेड? मुझे हर आदमी यही बोलता है कि सर आपसे मिलते हैं तो अच्छा सा लगता है। सो आई फील गुड। तो आज हमारी इस ईयर की लास्ट क्लास है ना? तो नेक्स्ट ईयर का क्या रेजोल्यूशन है? कैसे, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग योर न्यू ईयर? एक काम करते हैं, उड़ान वालों से बोलते हैं क्लास के बाद ना केक मंगवाएं, है ना, केक कटवाएं। आईटी, अच्छा तुम कब जा रहे हो आईटी दिल्ली? लेकिन नहीं गए? अरे कभी भी बोल दो, तुम्हारे चेयरमैन बहुत अमेजिंग आदमी है, मैं बता रहा हूं, मिस्टर चतुर्वेदी, आस्क हिम, ही विल अरेंज अ विजिट फॉर यू। आप मिलो सर से कि नहीं? आप सर से बोलो, अरेंज करा देंगे वो, नहीं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट उन तक पहुंचाता हूं, ठीक है? पक्का, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, आई विल डेफिनेटली ट्राई। क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन इज, ये 2000 साल पहले 1999 में आया था। He says there is a quarter of a cylinder of radius r. So this is quarter of a cylinder and this radius is r. सही है? The refractive index of glass. Sir, what about online students? ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, आईआईटी दिल्ली की जो मैंने बात कही है, हाँ हाँ, सो आई एम प्रिपेयरिंग यू टू गो देयर। मैंने ये बोला है ना कि अगले साल जाएंगे, अगले साल तो जाएंगे ही। गोमती नगर, डोंट वरी, गोमती नगर इज इन कानपुर, सो यू कैन गो एंड विजिट आईआईटी कानपुर ऑल्सो। यार तुम्हारे तो कितने मजे हैं यार। सीबीएसई क्या इनिशिएटिव है ये, मानना पड़ेगा। कोई ऐसे कैसे सोच सकता है? मतलब यू हैव कलेक्टेड गर्ल्स अक्रॉस इंडिया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आई मीन यू शुड सीरियसली थैंक योर मिनिस्टर एंड योर चेयरमैन। विद दिल से आपको उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन क्लासेस के लिए बच्चों को कितना ट्रैवल करना पड़ता है, फीस कितनी हाई होती है, टीचर्स क्या क्या पैसे मांगते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो पता ही है आपको हाल। जस्ट इमेजिन दैट यू आर सिटिंग हियर हैविंग फूड, हैविंग लंच। क्या किस्मत पाइए रे, काश मैं भी उड़ान की लड़की होता है भाई। गुड यार, वेरी नाइस। सो इट्स ए क्वार्टर ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. is placed on the table. Now a point object P is kept at a distance mr from the flat surface. He says find the value of m such that the ray coming out from this curved surface is parallel to this axis. It's a good smart question.
still 245 na. Try it. अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए थे ना, उसमें हमने पावर रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस की ऐड करी थी, बट दैट इज ओनली ट्रू इफ द डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. इस केस में डिस्टेंस इज लार्ज, therefore you will have to independently consider one single surface and then the second surface. So the relevance of this question is to understand that when you have a situation like this, you have to split it into two parts. Try karo. Try karo. Hmm. Let's not get scared. Do you realize this is surface 1, this is surface 2? Right? Surface 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, रखा कहां पर है? So what would you write? Wonderful. प्लस माइनस प्लस, रखा है, रियल है, तभी तो रखा है. गया कहां? y कितना हो गया? इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ बाय द वे? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नेगेटिव साइन? द इमेज इज आल्सो इन द सेम मीडियम एंड दिस इज 1.5 mr, तो स्लाइटली अवे. यहां पर हुआ कुछ ऐसे हुआ होगा ना. So now this distance becomes 1.5 mr. You agree? And for this second surface, this distance becomes 1.5 mr plus r. Okay? Now you tell me one thing. For this surface, is this object real or virtual? सोच के बोलना. Real. रे यहां से डाइवर्ट करके जा रही है ना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है. सो इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? r. राइट फ्रेंड्स? नाउ व्हेन आई से इट गोज टू इंफिनिटी, व्हाट डज दैट मीन? वेयर इज द इमेज? वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? इंफिनिटी. हाँ है ना? सो μ1 कितना लेंगे इस सरफेस के लिए? फॉर दिस सरफेस, इंसिडेंट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच प्लेस, विच मीडियम? Glass. So, very good. Upon distance of the object plus, wonderful, 1 by, and this will be equal to power, mu concave minus mu convex. So 1.5. Such wonderful people you are यार, एकदम तो समझ जाते हो आप. मजा आया कि नहीं? Let me explain this question again. There is a request which has come from Coimbatore. Okay. My dear friend, Kendriya Vidyalaya, Coimbatore, the question is that this is a quarter of a cylinder whose radius is r. This is made up of glass, and the refractive index of this glass is 1.5. Now, and the radius of curvature is r, and there is an object which is kept at P, and the distance from the flat surface is mr. Now the question is that this object, the ray starts from here
And finally, when it comes out from this curved surface, it goes parallel to the principal axis. Which means the final image after the refraction from this curved surface 2 will be at infinity. Now there are two important things which you have to understand. One is, in most of the questions we used to add powers of both the surfaces. You cannot do that here because the distance between this and the second curved surface is r, which is very, very large. So you can't do this. So we have to go independently. We go step 1 with this. So for as far as this surface is concerned, the object is kept at mr. So I would write, and it is in air. So this will be 1 by mr. A positive sign because it is a real object which is kept here. Plus, it goes to the refractive index here. It goes refractive index to the medium where refractive index is 3 by 2. So it's 3 by 2 y. So we get y equals minus 3 by 2 mr. The relevance of this negative sign is that the image is in air only, in the same medium in which the object is kept. And 3 by 2 mr basically means that this is towards left. Now, for this second medium, this becomes a real object. This surface, this becomes the real object. The distance of the real object from this curved surface is going to be this. The incident ray to this surface comes from this medium. So we take 1.5 upon the object distance. The image is in air at infinity. And the power of this refracting surface is concave minus convex 1.5 minus r by r. If you solve this, what is the value of, निकालना क्या था हमको? m, कितना आ रहा है? 4 by 3. Right, we are left with 5 minutes. Let me take one more question. This is silvering of refracting surface. Now I'll explain what I'm talking about. Suppose you have a lens. This radius of curvature is r1, this is r2, this is mu1, and this is mu2. We keep an object here, and this distance is x. And now I silver this surface. Let's first understand, whenever a lens, one side of a lens is silvered, it starts behaving as a spherical mirror. Either it will behave as a concave mirror, or it will behave as a convex mirror. Clear? Now, how do we come to know whether it's concave or convex? When I say power, and when I say positive power, it means either it is a convex lens or it is a concave mirror, because both of them have a positive power. And the reverse goes for, the negative power is for a concave lens or a convex mirror. So if the power, final power, comes out to be positive, so it is concave. If the net power comes out to be negative, it is convex. It's a mirror. Now how do you calculate the power of this? This is surface 1, this is surface 2. एक रिफ्रैक्शन यहां होगा, एक रिफ्लेक्शन यहां होगा, एक रिफ्रैक्शन यहां होगा. So that means this surface, the ray will come twice, and from this surface, the ray will come once. So I can write P net, power net, as 2p1 plus p2. Perfect. Now what do you mean by p1? P1 is the refracting surface of this medium, of this surface. Concave minus,
So I'll write mu2 so this is the refracting, this is the power of this surface. Clear? Now this is interesting which I'm going to tell you. अभी जो बताने वाला हूं ध्यान सुनना. इस reflecting surface की जो power होती है, the reflecting surface of a power or power of a reflecting surface is 2 the refractive index of this medium, which is mu2 by r2. What I'm saying is, if you have a reflecting curved surface, this is mu, this radius of curvature is r. If somebody says find power, so P will be 2 mu by r. So this becomes the net power. I think we'll have to leave the class now and we continue in the next class. Okay? Thank you.